Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your English Reader Class 5 textbook, and we are doing a poem today named The Plaint of the Camel. The Plaint. Plaint का meaning होता है complain. So, there is a camel who has a lot of complaints about each and everyone. So the poem is about a camel who is complaining about few things. This poem is after your chapter number 2, page number 33 of the book. So let's start reading this poem. The poem starts. Cannery birds feed on sugar and seed. Parrots have crackers to crunch, and as for the poodles, they tell me the noodles and have chickens and cream for their lunch. But there's never a question about my digestion. Anything does for me. So, here, the first word is cannery birds. What is cannery birds? See, this is a canary bird. It is a small yellow bird that sings and is often kept in a cage as a pet. So these canary birds they feed on sugar and seed. ये लोग क्या खाते हैं? ये sugar खाती हैं और ये seeds खाती हैं. Then comes parrots. Parrots have crackers to crunch. कोई भी nuts होते हैं. Crackers यानी कि any thin dry biscuits. तो parrots हमारे खा लेते हैं. And as for the poodles, they tell me the noodles. So it is a poodle. Poodles are dogs with thick and curly fur. इनके फर बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं और बहुत कर्ली भी होते हैं. तो ऐसा लगता है जैसे नूडल्स हैं इनके हेयर्स में. फॉर द पॉडल्स दे टेल मी द नूडल्स. दिखने में कैसे लगते हैं? नूडल्स के जैसे. हैव चिकन्स एंड क्रीम फॉर देयर लंच. और ये पॉडल्स अपने लंच में क्या खाते हैं? चिकन्स एंड क्रीम. बट देयर्स नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन. कैमल बोलता है मेरे डाइजेशन के बारे में तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है. एनीथिंग डज फॉर मी. कोई स्पेसिफिक खाना ही नहीं होता कैमल का. कैमल कैन ईट एवरीथिंग. जैसे हमने कैनरी बर्ड्स का बोला कि वो सिर्फ शुगर एंड सीड को कंज्यूम करती हैं. पैरट्स के लिए बताया वो क्रैकर्स कंज्यूम करते हैं. पोडल्स के लिए बताया वो चिकन्स एंड क्रीम कंज्यूम करते हैं. लेकिन जो हमारा कैमल है उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है जो कि वो खाता है. वो सब खा लेता है. एनीथिंग डज फॉर मी. एंड दैट इज़ वाई उसे यही कंप्लेन है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक फूड क्यों नहीं है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पेज नंबर 34. कैट्स यू आर अवेयर यू कैन रिपोज इन अ चेयर. अब जो कैट्स होती हैं उन्हें सोने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए दे कैन यूज़ अ चेयर. वो चेयर पर भी रेस्ट कर लेती हैं. सी, एक कैट हमेशा किसी चेयर पर भी आपको रेस्ट करती हुई मिल जाएगी. चिकन्स कैन रूस्ट अपॉन रेल्स. जो बाउंड्रीज होती है घर की, चिकन्स जो होते हैं हमारे वो उस पर भी खड़े हो सकते हैं. पपीज़ आर एबल टू स्लीप इन अ स्टेबल. जिस जगह पे डॉग्स सोते हैं उसे स्टेबल बोलते हैं. तो पपीज़ के लिए भी स्पेसिफिक जगह है उनके रेस्ट या रिलैक्स करने के लिए. एंड ऑयस्टर्स कैन स्लम्बर इन पेल्स. Now, who is an oyster? Oyster is a shellfish that we eat. Some oysters produce precious jewels also. These are oysters and they can slumber. The meaning of slumber is sleep. In pails, the meaning of pails is bucket. So, oysters can sleep in buckets. But no one supposes a poor camel dozes. Any place does for me.
अब इसको दोबारा से कैमल को क्या कंप्लेन आई कि हर एनिमल के सोने के लिए एक स्पेसिफिक जगह है, लेकिन एज़ फॉर अ कैमल, कैमल के पास कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है और ये कहीं भी ही कैन स्लीप और ही कैन रिलैक्स। तो इसके पास कोई अलग से स्पेसिफिक जगह नहीं है। दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी सैड और वो कंप्लेन कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, lambs are enclosed where it's never exposed. Lambs, the meaning of lamb is a young sheep. So a young sheep is always kept enclosed. उनको हम खुले में नहीं छोड़ते हैं. Coops are constructed for hens. Hens के लिए हम लोग coops बनाते हैं. Coops are a very small house that is used for keeping chickens. चिकन्स को रखने के लिए जो घर हमने बनाया उसे हम कूप्स बोलते हैं. किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउसेस वेल हीटेड. किटन्स, जो किटन्स होती हैं उनके लिए भी हम हाउसेस बनाते हैं जो कि काफ़ी गर्म रहते हैं. एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाय पेन्स. पिग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेन्स होते हैं. पेन्स का मीनिंग होता है अ प्लेसेस फॉर कीपिंग शीप. जिस जगह शीप को रखा जाता है, दैट प्लेस प्रोटेक्ट्स द पिग्स. बट अ कैमल कम्स हैंडी. वेयर एवर इट्स सैंडी, एनीवेयर डज फॉर मी. मीनिंग ऑफ हैंडी इज यूजफुल, बट अ कैमल इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज जहाँ पर भी सैंड होता है कैमल वहीं पर रह लेता है. इसके लिए भी कोई अलग से घर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो 3 कंप्लेंट्स तो हमने यहाँ तक रीड आउट कर ली है. नंबर 1 वॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक फूड फॉर द कैमल. नंबर 2 इज़ देयर इज़ नो प्रॉपर प्लेस फॉर द कैमल टू स्लीप. नंबर 3, देयर इज़ नो हाउस ऑफ अ कैमल. जहाँ पर भी सैंड होती है कैमल कैन स्टे ओवर देयर ओनली. मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल वुड लाफ इफ़ यू रोड अ जिराफ. लोग हंसने लग जाएंगे अगर आप लोग जिराफ पे बैठकर जाओगे. हम ऑब्वियसली जिराफ तो हम लोग कभी जिराफ के ऊपर बैठकर ट्रैवल नहीं करते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो शायद लोग हंसने भी चालू हो जाएंगे. और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स. दिस इज़ एन ऑक्स. हम कभी ऑक्स के ऊपर बैठकर भी ट्रैवल नहीं करते हैं. तो अगर हम ऑक्स के ऊपर बैठ के भी ट्रैवल करेंगे तो पीपल विल लाफ एट अस. इट्स नोबडीज़ हैबिट टू राइड ऑन अ रैबिट. सिमिलरली जैसे हम जिराफ और ऑक्स के ऊपर बैठकर राइड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम रैबिट के ऊपर बैठकर भी राइड नहीं कर सकते हैं. और ट्राई टू बी स्ट्रैडल अ फॉक्स. द मीनिंग ऑफ bestraddle is to sit across the back of an animal with a leg on either side. Now, who is a fox? This is a fox, and I have never heard anyone riding a fox. So, if you ride a fox, maybe people would laugh at you also. But as for camel, he is ridden by families. Any loads does for me. When we talk about camel, people actually ride a camel and they carry loads. बहुत भारी भारी सामान भी वो अपने ऊपर लेकर ट्रैवल करते हैं. वो फैमिलीज़ को लेकर भी ट्रैवल करते हैं. सो वाई इट इज़ सो. कैमल की कंप्लेन है कि इतने सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप बैठकर राइड नहीं कर सकते हो. देन वाई मी? वाई पीपल लाइक टू राइड मी? ऐसा क्यों? Last paragraph. A snake is as round as hole in the ground. अब स्नेक की जो शेप होती है वो ऐसी राउंड होती है एंड बिल्कुल जो एक ग्राउंड में एक होल होता है बिल्कुल वैसी ही शेप होती है एक स्नेक की. एंड weasels are wavy and sleek. Weasels are small animals with fur, short legs and long tails. So how does a weasel look like? See, here it is a weasel. A weasel looks like very small animal it is, and
इट इज़ वेरी स्मूथ एंड शाइनी। तो बहुत ही स्मूथ और शाइनी होता है ये, वेवी होता है ये। एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर। एलिगेटर्स आर क्रोकोडाइल्स। तो वो भी एक स्ट्रेट ही रहते हैं, वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनकी शेप में। दे आर ऑल्सो स्ट्रेट। But a camels, sorry, then lizards that live in a creek. Creek is a small, narrow river. Lizards live over there. But a camel's all lumpy and bumpy and humpy. Any shape does for me. Now, when we look at a camel, it's all lumpy. The meaning of lumpy is full of lumps. Now, the meaning of lumps is जो बहुत ही मोटू सा होता है। सो एक मोटा सा एनिमल है ये। एंड बम्पी, बम्पी इज़ नॉट फ्लैट और स्मूथ। व्हेन यू विल सी, तो ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा है, एक प्लेन और स्मूथ नहीं है। एंड हम्पी, कैमल के ऊपर एक हम्प होता है। दिस इज़ अ हम्प ऑफ अ कैमल। एंड ये हम्प सिर्फ कैमल पर होता है। सो कैमल्स आर ऑल लम्पी, बम्पी एंड हम्पी। एंड इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। जैसे स्नेक के लिए हमने बोला इट इज़ राउंड, एलिगेटर्स आर स्ट्रेट। कैमल्स, कैमल्स के लिए कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं होती है हमारे पास। एनी शेप डज फॉर मी, आप इसको कोई सी भी शेप बोल दोगे बिकॉज उसके लिए कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। सो दीज वर द कंप्लेंट्स ऑफ अ जिराफ, सॉरी, द complaints of a camel. This poem is written by Charles Edward Carroll. Let us read about the poet as well. Charles Edward Carroll, 1851 to 1920, was an American author. He is an American author. He chiefly wrote novels and poems for children. So basically, this person is writing novels for children. He is known for his novels Davy and the Goblin and The Admiral's Caravan. His poems The Voluping Window, Blind, and The Plaint of the Camel are widely read even today. So these are some famous poems and some famous novels that is written by Charles Edward Carroll. So, this was all about your chapter. I hope you understood well. If you're still having any doubt, please write me in the comment section below. If you ever want to contact me, my email ID is also provided in the description box. The link for the question and answers of this chapter is attached in the description box only. So, you can click on the link and you will get all the answers of this chapter. Thank you so much and have a nice day. Keep watching, keep sharing.